Hello students. Now after completing the refraction and dispersion topic, we have to complete optical instruments. Optical instruments. Now how many types of optical instruments with the ray diagram and derivations we have to do? So there are three instruments which we have to cover in this part of optics. Simple microscope, compound microscope and telescope. There are three instruments which we have to cover. Okay. Now for each of the three instruments, we have to do two cases. When image is at D, D means least distance of distinct vision. Least distance of distinct vision, which you call 25 centimeter. That is our capital D. Okay. How close we can keep an object in front of the eye so that we can see it clearly, that is called least distance of distinct vision. That is 25 centimeter for a normal eye. So what we have to do? We have to do two types of cases for each instrument for these two microscopes. Firstly, image at D we will form, and then secondly image at infinite we will form. Here also image at D and image at infinite we will form. So these are two cases. And in telescope we will do two cases, refracting type and reflecting type telescope. Okay. Now what we will be using to make these instruments? So for simple microscope we use a single convex lens. Okay. We use convex lens. And for compound microscope we use two convex lenses. And here in telescope, if it is refracting type, then we'll use lenses. But if it is reflecting type, then we will use mirrors. Okay. Now, what is the meaning of microscope? So, microscope, micro means very small objects if we have to see. So, we need to make the bigger images of that objects. So, microscopes are used to make bigger images of very small object. So, microscope, that means छोटी चीजों को देखने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होगा उसे बोलेंगे माइक्रोस्कोप. सो वेदर सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप द मीनिंग इज द सेम. ओके, दिस इज बेटर because here we will use two lenses. So better magnification will be achieved. Now telescope. Telescope means tele. Tele means distance. So any object which is very far and we have to see that object. So that the instrument we will be using telescope. So telescope is used to bring very far off objects closer. So like if we have to see any astronomical object and we have to study it, so we use the telescopes. Okay. So if any far off objects we have to see, we use telescope, and if very small objects we have to see, so we use the microscopes. Okay. Now let us proceed to one by one the instruments. So let us start with the simple microscope first. Note down this classification. Okay, let us start with the simple microscope's first case. When image is at D, image is formed at capital D. Capital D means least distance of distinct vision. You will be using in numericals its value 25 centimeter. Okay, now these instruments are actually 5 mark questions in the board paper. So what we have to do actually, for whichever case is asked, we have to draw the ray diagram. It should be labeled ray diagram, and then we have to do calculation of magnification M. Okay. So let us start first the ray diagram, then we will discuss this magnification part. So first of all, we use the convex lens, and single lens will be used here because it is simple microscope. Now convex lens we have to use, and we have to use that image formation in which the image is formed on the same side of object and it is bigger than object. So that image formation is the one in which object should be kept between F and C. So this is the object. AB is the small object which is kept between F and C. C means optical center. F is the focus. So let us draw 2F, and on both the sides we know that F and 2F are there. Okay, so approximately at the same distances we have to draw.
Now let us complete the image formation. This is that same image formation which we used to do. ऑब्जेक्ट कहाँ है? F और C के बीच में है. इमेज बनाने के लिए कोई भी दो रेज लेनी है. रूल क्या है? एक रे लेते हैं हम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. आफ्टर रिफ्रैक्शन ये जाती है फोकस से, तो इसको फोकस से पास कराना है. ओके. सेकेंड रे हम ऑप्टिकल सेंटर से ले सकते हैं. ऑप्टिकल सेंटर से जो रे जाती है वो अनबेंट, ओके, अनबेंट पास हो जाती है. सो ऑप्टिकल सेंटर से जो रे गई ये अनबेंट पास होगी. नाउ वी विल नोटिस कि यहां पर ये दोनों रेज नहीं मिलती हैं. दे डोंट मीट हियर. सो रियल इमेज नहीं फॉर्म होगी. अब अगर यहां पर ये दोनों रेज कभी नहीं मिल रही है तो हमें बैक साइड पे इनको एक्सटेंड करके मिलाना है. सो व्हाट वी डू नाउ, वी एक्सटेंड the two rays behind. So wherever they meet, that is the point of the position of the image. So this is the image formed. Okay, this is the image formed, and we will call the image name A dash B dash because AB is the object. This way we complete the image formation. Okay, this is the image formation. Now some more points are remaining. What are that points? First of all, what we do here, actually this type of tube is there in the simple microscope. So screen is also kept here only somewhere. So what do we do? This image, wherever it is formed, we have to show it that it is a D position formed. D position. Okay. Now where is the eye? Actually in the simple microscope, the observer is just near the lens. So here the eye position is there. Observer is here and he is seeing very small object. सो व्हाट ऑब्जर्वर क्या करता है? ऑब्जर्वर यहाँ पर एक ट्यूब रखेगा. इस ट्यूब में यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखेगा. ये ऑब्जेक्ट जो बहुत स्मॉल है इसकी बड़ी इमेज बनेगी यहाँ पर. ओके. अब जहाँ पे भी हमें क्लियर इमेज मिलेगी वहाँ पर हम स्क्रीन को सेट करेंगे और ट्राई ये करेंगे कि ये जो इमेज है ये डी डिस्टेंस पे बने. ठीक है. डी यानी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, क्योंकि हमारा केस यही है. अब हमें क्या करना है? मैग्निफिकेशन सॉल्व करना है. तो कुछ और चीज़ें इसमें ड्रॉ होंगी इस डायग्राम में. व्हाट आर दैट एक्स्ट्रा थिंग्स? मैग्निफिकेशन एम इज एक्चुअली डिफाइंड बाय एंगल्स. एंगल सबटेंडेड बाय इमेज एट आई, एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट आई, रेशियो ऑफ टू एंगल्स. बट द कंडीशन इज दैट बोथ शुड लाई एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द आई. ओके. सेम डिस्टेंस मीन्स डी डिस्टेंस फ्रॉम द आई. डी डिस्टेंस लिख देते हैं. अब ये देखो आई से इमेज ये रही. इमेज ऑलरेडी डी डिस्टेंस पर है लेकिन ऑब्जेक्ट जो है वो डी डिस्टेंस पे नहीं है. तो हम क्या करते हैं? पहले इस ऑब्जेक्ट का सब्स्टिट्यूट बनाएंगे डी डिस्टेंस पे. तो हमें क्या करना है? इसी ए बी साइज का आर्क यहाँ कट करना है. ए डैश क्यू. ठीक है. ए डैश क्यू ये हुआ ऑब्जेक्ट का सब्स्टिट्यूशन, यानी ऑब्जेक्ट की साइज का एक आर्क हमें कट करना है डी डिस्टेंस पे. तो हमने कट किया. अब एंगल्स बनाने हैं. तो एंगल्स को ऐसे ही लर्न करना है, अल्फा एंड बीटा एंगल. इमेज के एंगल को हम बीटा बुलाएंगे, ऑब्जेक्ट के एंगल को हम अल्फा बुलाएंगे. तो इमेज है ए डैश बी डैश, ये बड़ी वाली, इसका एंगल आई पर, ये तो हुआ बीटा. ओके. अब ऑब्जेक्ट भी डी वाला ही लेना है. ऑब्जेक्ट ये नहीं लेना है, ऑब्जेक्ट डी वाला लेना है. इसका जो एंगल बनेगा आई पर, आई यानी सी पर, इस एंगल को हमें बुलाना है अल्फा. सो अगेन आई एम टेलिंग यू व्हाट आर दैट थिंग्स. ये है इमेज के एंगल को सी पर बुलाना है बीटा, और ये है ऑब्जेक्ट ये नहीं लेना है. ठीक है. ऑब्जेक्ट वही लेना है जो डी डिस्टेंस पे हमने बनाया, अभी सब्स्टिट्यूट बनाया. सो ऑब्जेक्ट का जो एंगल आई पर होगा उसे हमें अल्फा बुलाना है. अब हमें मैग्निफिकेशन एम सॉल्व करना है, यानी बीटा अपॉन अल्फा सॉल्व करना है. तो हम अप्रॉक्सीमेटली 10 से सॉल्व करेंगे, 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा. सो इट इज दिस वे. एम को स्टार्ट करेंगे बीटा अपॉन अल्फा से. बीटा को हम अप्रॉक्सीमेटली 10 बीटा और अल्फा को 10 अल्फा लेंगे. कंप्लीट ऑप्टिक्स चैप्टर में सारे एंगल्स 10 से ही सॉल्व होंगे. ओके. अब 10 बीटा के लिए ट्राइंगल ढूंढना है. ओके. अब बीटा के लिए ट्राइंगल देखो, बीटा यहाँ बन रहा है,
तो हम ये छोटा ट्राइंगल भी ले सकते हैं बीटा के लिए और यही बड़ा ट्राइंगल भी ले सकते हैं। अब छोटे ट्राइंगल से इजी होगा सॉल्व करना, हम लोग स्मॉलर ट्राइंगल ले रहे हैं। तो ये देखो CAB ट्राइंगल, CAB में यहाँ बीटा एंगल बना हुआ है। तो टेन बीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टेन बीटा क्या हुआ, AB अपॉन बेस CA, ठीक है, AB अपॉन CA हो गया। अब अल्फा ढूंढना है, अल्फा का एक ही ट्राइंगल है, ये रहा, ये अल्फा का ट्राइंगल है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, A डैश क्यू अपॉन CA डैश, ओके, A डैश क्यू था परपेंडिकुलर, ये वाला ट्राइंगल अल्फा वाला, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ओके। अब इससे क्या हुआ, AB और A डैश क्यू तो सेम साइज का है, सो AB अपॉन A डैश क्यू ये तो कट हो जाएगा, बचेगा क्या, CA डैश ऊपर आ गया रेसिप्रोकल से एंड CA बचा। अब इसमें से हमें क्या पता है, तो CA डैश पता है, CA डैश इज D एंड CA होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ओके, ये ऑब्जेक्ट है इसलिए C से A होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U। अब इसको U लिखा और साथ साथ में हम U कब कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए हम लोग थिन लेंस इक्वेशन का यूज करेंगे, ओके, बिकॉज हमें इमेज डिस्टेंस पता है और फोकल लेंथ को F मानना है वो भी पता है, तो हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U को सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लेंस फॉर्मूला। सॉल्व सेपरेटली, सो लेंस फॉर्मूला लिखा, -1/u + 1/v = 1/f। अब क्या करना है, u हमें सॉल्व करना है, सो u विल रिमेन एज इट इज। व्हाट इज v, इमेज डिस्टेंस, सो यू सी इमेज डिस्टेंस इज d and because it is on the same side of the object we will write it -d, okay, and focal length, for convex lens focal length is positive only, we'll put here positive. After that we have to solve this u, so this d should be shifted that side, okay, so when 1/-d shifted that side it is becoming +1/d, take LCM df, so f plus d upon df is the answer of -1/u, okay. Now here what we did, magnification we solved by beta by alpha, 10 beta by 10 alpha, we solved it from the diagram, perpendicular upon base, perpendicular upon base, perpendiculars cancelled, bases are left. Now CA dash we have written D and CA dash is actually same side of the object, so we will write it -d. Don't put any sign in the u because u is unknown for us, okay. Now here this 1/u which we have got from here, that we will put here, okay. D is already there and -1/u we have obtained from f plus d upon df. So finally you see d is getting cancelled, f plus d by f, that means f by f is 1 plus d by f. This is the final answer obtained of magnification of the first case of simple microscope. Okay students, now the second case of simple microscope is when the image is formed at infinity, or we can also call it by the name normal adjustment case. Remember, normal adjustment case means image at infinity. Now let us start making the image formation diagram. So in board paper the image diagram also has marks, okay, 1 or 2 mark diagram will be asked. Now let us start making the diagram. First of all you see, if the image is to be formed at infinity, image infinity पे बनानी है तो object होना चाहिए focus पे, ठीक है, this is the rule. So let us keep the object AB at the focus. So this is the object kept at the focus itself. Now let us make the image formation. क्या करना है, एक first ray ली parallel to principal axis, after refraction ये पास होगी focus से, ठीक है। सेकेंड रे हमें लेनी है ऑप्टिकल सेंटर से, और क्योंकि इमेज बनेगी इन्फिनाइट पे यानी पैरेलल रेज होनी चाहिए, दे शुड नेवर मीट, सो ट्राई मेकिंग दैट बोथ द रेज विच आर ऑब्टेन्ड लाइक दिस दे आर पैरेलल टू ईच अदर, okay, these two rays are parallel to each other which are obtained. So if the rays are parallel to each other they never meet, okay, and if we extend them behind then also they will not meet, but our screen is behind only where we are going to get the image, so at least we need to extend them behind.
like this. This way they should never meet. So this way both the sides, the rays should look parallel only. This way. Now we know that these two rays will not meet, but screen we will keep at d distance only. Okay? Because screen we cannot keep at infinite. So suppose screen is kept at d distance like this. Okay? So that means here we will get an image. So we will show that A dash B dash image is formed here. A dash B dash. Let us name it A dash B dash. Okay, the first ray only you make the image. Now we know that image should be formed at infinity. So clear image is formed at infinity and blur image we can get at d distance. At any other distance we will get the blur image. So this way the image is formed. Okay, image is formed here at d distance. This is not the clear image, this is the blur image. Now again in the same manner we will calculate the magnification. Now magnification m, that is again beta upon alpha. That means change is not there, it is same. Angle subtended by image, angle subtended by object. The ratio of 2 is called magnification. Both should lie at d distance from the eye. This is the condition. Okay, so image is already at d distance, as you can see. For the object, again we will take the substitute. We will call it A dash Q. So A dash Q size is equal to object AB. Now we'll show the angles. So let us join it. Now object angle here at the I means C position. Object angle here is alpha and image angle here is beta. Now in the same manner we will calculate m, beta upon alpha, tan beta upon tan alpha. Now we'll select the smaller triangles for beta. So smaller triangle is this only. Now tan beta means this triangle you see. AB perpendicular upon CA base. Then tan alpha. So tan alpha means this triangle. A dash Q perpendicular upon base is CA dash. Then AB and A dash Q are cancelled because they are equal. It is the same procedure. CA dash upon CA left. Now here the change will appear. What is the change? CA dash is minus D, image distance. Okay, and CA. C to A distance is now what? Focal length. Earlier it was U, but now it is directly focal length. So it is because this side of the object. So object side distances are always negative. So both are negative. Finally the answer is left as D by F. Okay, so here the magnification answer is obtained as D by F. So there are two answers of simple microscope magnification. When image is at D, then 1 plus D by F. And when image at infinite, then D by F answer. So where magnification is more, that is the first case, D case. But which case is known as normal adjustment case? So normal adjustment case is this only, infinite case. Okay. Now we will proceed to the compound microscope. And we can notice one more thing, that if F is smaller, then more magnification is achieved. Okay, if F smaller in both the cases, then magnification more is achieved. And also where the simple microscope is used. So uses are watchmakers or jewelers use this microscope to see the fine parts of watch or jewelry. Okay, and also to read the readings of vernier calipers, like that. So let us list down the uses also. You can note down these uses. Okay, so this is all about simple microscope.